as I was discussing about the excretion, this diagram, it shows the physiology of excretion. Here, the Malpighian tubule is said to have two distinct regions. First region is where the uh, the proximal region, which is the absorptive region, which opens into the gut, and the other is the distal blind region, which is said to be the secretory region. Physiology of Malpighian tubule is almost same in all the insects, as I have already mentioned. The diagram of Malpighian tubule as given by Wigglesworth show the two distinct regions, as I have already mentioned, distal blind secretory region and proximal absorptive region, which opens into the gut. As the name suggests, absorptive region is where the water is absorbed, where, and in the distal blind region, the nitrogenous waste from the hemolymph is absorbed, is taken into the Malpighian tubule, converted into uric acid, and further passed to the hindgut, from where the nitrogenous waste gets excreted. So, we know that the distal region is hanging freely in the hemocoel and proximal absorptive region opens into the gut. The inner cell lining the distal region have well developed brush borders, while the proximal region cells are less differentiated and they are called the honeycomb border. Insect that produces the nitrogenous waste, or the nitrogenous waste that is produced during the metabolic activity, the waste in the form of soluble potassium urate is liberated into the hemolymph. These, along with water, are taken up by the glandular cell lining the distal region of Malpighian tubule. In the cells of tubule, the potassium urate react with water and carbon dioxide present in the cells as a result of respiration to form potassium bicarbonate and uric acid. The potassium bicarbonate is absorbed back into the hemolymph, but uric acid is left out in the lumen of the Malpighian tubule. As the uric acid in dissolved condition move back into the proximal region of Malpighian tubule, the water is reabsorbed and it is passed into the hemolymph. Excretion सभी इंसेक्ट्स में, चाहे कॉकरोचेस हो या ग्रास हॉपर हो या हनी बी हो, में लगभग समान होता है. जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स मिड गट और हाइंड गट के बॉर्डर में प्रेजेंट होता है और ये लॉन्ग ट्यूब्यूल हीमोलिम्फ में सस्पेंडेड होते हैं, हीमोलिम्फ में उपस्थित होते हैं. इन ट्यूब्यूल की दूरस्थ एंड जो है वह बंद होती है, ब्लाइंड होती है. हीमोलिम्फ में उपस्थित नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि सॉल्युबल पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में होता है, वह मैल्पिगियन ट्यूब्यूल द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है.
पोटेशियम यूरेट के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रवेश करते हैं। इन रसायनों का मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स में रिएक्शन होता है और इसके फलस्वरूप पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड का निर्माण होता है। यानी कि पोटेशियम यूरेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स में होता है, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड बनते हैं। पोटेशियम बाइकार्बोनेट वापस हीमोलिम्फ में एब्जॉर्ब कर दिया जाता है या हीमोलिम्फ में भेज दिया जाता है, जबकि यूरिक एसिड मैल्पिगियन ट्यूब्यूल के ल्यूमेन के अंदर रहता है। यह यूरिक एसिड डिज़ोल्व कंडीशन में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल के अंदर हाइंड गट की तरफ मूव करता है, यानी प्रॉक्सिमल रीजन की तरफ मूव करता है और प्रॉक्सिमल रीजन पर से वाटर पुनः रीएब्जॉर्ब हो जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये जो डिज़ोल्व्ड यूरिक एसिड है ये अब क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं। वाटर वापस हीमोलिम्फ में भेज दिया जाता है। यह पानी के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए किया जाता है। इस प्रकार से यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में कॉकरोच के हाइंड गट या किसी भी इंसेक्ट के पश्च आंत्र में भेज दिया जाता है, जो कि बाकी अपचित अनडाइजेस्टेड फूड के साथ शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है और ये एनिमल्स यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स ना केवल नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन में सहायक होते हैं, बल्कि वाटर के कंजर्वेशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस वजह से मैल्पिगियन ट्यूब्यूल को ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स आर सेड टू बी एक्सक्रीटरी as well as osmoregulatory in function, because they help not only in eliminating the nitrogenous waste outside the animal or insect, but they also help to conserve the water. Since water is scarce or scarcely available to the insects living on the terrestrial habitat. Besides Malpighian tubule, there are other excretory organ also, which helps in eliminating the waste, like the nephrocytes. These are chain of cells found along the heart in the pericardial sinus or associated with fat bodies. These nephrocytes store nitrogenous waste which may be removed later by the hemolymph. Fat body, यह